हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ घुगनी और समोसा मुकबांग, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। साथ में यहाँ पे मैंने दिया है 2 kinds ऑफ सॉसेस। यहाँ पे तो ऑफकोर्स केचप है। ये है काशुंदी मेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, और ये ना बंगाल की बहुत ज़्यादा फेमस सॉस है। सो दे ईट लिटरली, दे कैन ईट everything with kashundi and it's really amazing। एकदम झाज ना पूरा नाक तक जाता है। एंड साथ में यहाँ पे बहुत सारी मिर्चियाँ हैं, नींबू है, साथ में यहाँ पे दिया है मैंने छोटा सा कोक, एंड दैट्स इट। सो उसी के साथ ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स डिग इट।
Wow, it's so beautiful.
What is up with these bikers? I really feel scared of the animals, and also people, of course, but at least लोग तो देख सकते हैं, and लोगों को उड़ाने से भी you won't roam freely, you will be in jail. But animal को उड़ाने से सिर्फ 50 rupees fine, and that's not fair. And these people need to be really, really responsible for lives. They just ride the bike so horribly. I don't like it at all. I just don't like it at all. I'm sorry if आपको रेसिंग वगैरह पसंद है, पर मुझे पसंद नहीं है. हाँ, अगर रेसिंग फील्ड में अगर मैं जाऊँगी तब मुझे पसंद आएगा रेसिंग, ये रास्ते में नहीं, नॉर्मल रोड्स में नहीं. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching till here. If you have watched till here, and if you haven't also, thank you so much. और अगर ये combo आपने try नहीं किया है, it's high time you should try Ghugni with samosa and kasundi. It's amazing. साथ में नींबू, मिर्ची, प्याज, heaven. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. Thank you so much, guys, and see you all in my next video.